हेलो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लेक्चर रियल एनालिसिस का है और इसमें हम बेसिक्स ऑफ रियल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेट्स और इंटरवल से। जैसा कि हमें पता है कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। सेट इज ए वेल डिफाइंड collections of object. So what is the meaning of well defined? Well defined means, so well defined means that there is for every element of the set there exists yes or no. Yes or no means either some objects belong to the set or it not belongs to the set. So there is a yes or no, whether an object in a set, whether an object in a set. तो बेसिकली ये मीनिंग होता है वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज यस और नो, वेदर एन एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है और नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, the sets of all students in class 4th whose numbers are less than 40 out of 100 in the subject math. So this is the collection, this collection is the set, because हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर कोई स्टूडेंट इस सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है, विद द कंडीशन दिस लेस देन 40 आउट ऑफ 100। इस तरह से हम देख सकते हैं। और so you already know there are various sets, various familiar set. For example, set of all natural number. You already what is the set of all natural numbers? Set of all natural numbers is like this 1 2 3 4। हम पूरे कोर्स में set of all natural number को इस नोटेशन से डिनोट करेंगे, natural number n से। Similarly, z को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? z of means set of all integers. Integer means -2 -1 0 1 2 4। इस तरह के एलिमेंट्स को इस सेट को हम जेड से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? क्यू से। इस कोर्स में सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर व्हिच x is equal to a by b, where a comma b belongs to integer and b non-zero। इस सेट्स को सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर,
सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, तो हम किसमें नोट करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट से। क्यू कॉम्प्लीमेंट्स में सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, or we can also denote this set as r minus q. So this or intervals. Now we define the intervals. Interval को हम डिफाइन करने वाले हैं. Let a b belongs to r and a is less than b. Then the open interval को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको नोटेशन से a, b. कुछ बुक्स में इसको इस तरह से लिखते हैं और कुछ बुक में इसको किस तरह से लिखते हैं, a, b. दोनों सेम नोटेशन है, बट हम इस नोटेशन का यूज करेंगे. Is equal to set of all real numbers are for which x is between a and b. Similarly, close interval को हम किस तरह से हम इस कोर्स में नोट करेंगे, क्लोज इंटरवल a, b. और इसको हम किस तरह से नोट करते हैं, set of all real number for which x is between a is less than equal to x is less than equal to b. इस तरह से क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में यही डिफरेंस होता है. यहाँ पे स्ट्रिक्टली होती है, स्ट्रिक्टली a इज लेस देन x इज लेस देन b होता है. यहाँ पे a इक्वल भी हो सकता है x. Similarly, we define the left half of an array, or similarly we define the left half of one, right half of one, left half of one interval और राइट हाफ ओपन इंटरवल. लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल किस तरह से करते हैं, ओपन इंटरवल a, b. तो इसमें वे सभी एलिमेंट्स आएंगे रियल नंबर जिसमें x की वैल्यू क्या होगी, a से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी और लेस देन इक्वल टू b होगी. सिमिलरली राइट हाफ ओपन इंटरवल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, a, b. यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे, यहाँ पे ओपन लगाएंगे. यहाँ इस बार इसमें वे सभी रियल नंबर्स आएंगे फॉर विच a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b. Now this is now we define the rays को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं. माइनस इन्फिनिटी कोमा ए, माइनस इन्फिनिटी कोमा ए, इसको बोलते हैं रे. इसको कैसी रे बोलते हैं, राइट ओपन रे. और इसको किस तरह नोट करते हैं, इसमें बेस भी रियल नंबर्स आते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से बड़े होंगे और स्ट्रिक्टली लेस देन होंगे a से, strictly. Similarly, we define माइनस इन्फिनिटी कोमा a और इसको क्या बोलते हैं, राइट क्लोज रे. इसमें वे सभी एलिमेंट्स आते हैं रियल नंबर्स जो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी और लेस देन इक्वल टू a. Similarly, we can define the other rays. Other rays means क्लोज इंटरवल a कोमा इन्फिनिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ओपन इंटरवल a कोमा इन्फिनिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली हम इसी तरह से इनकी डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे ये a है और माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स. Infinity is just a symbol. Here infinity is just a symbol to denote the infinity. So real line we can say, so real line
is itself a interval. Now we define some other things, like when the two sets are equal. When the two sets are equal, so and if A and B are the two sets, means that they are equal. It means that A is subset of B or B is subset of A. We already know what is the meaning of subset in elementary classes. Subset means all the elements of A will are belong to the set B. So graphically we denote this notion, subset notion, like this. If B is a set and A is a subset of B, then A is inside the set B. So A is subset of B means all the elements of the set A belongs to the set B. Similarly, we define the A complement. A complements को किस तरह से हम define करेंगे? Let, so here the universal set means R. Now here because we are studying the real system, so our universal set is R. So A complement. So we define the A complement is like this. Let R, let A complement, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं R minus A. It implies that वो सभी रियल नंबर्स जो A के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, X R belongs to the set of A complement. तो इस तरह से हम इसमें A complement को डिनोट कर सकते हैं. ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते हैं. A complement मींस क्या होता है? If R is our universal set, so if R is our universal set, if A is this set, then A complement is this portion. This portion is A complement. Now we see that. So we see that if A is subset of B, it means that if we take an element of A, then that element must belong to the B. So if we can also write this statement like this: if X belongs to A, then X belongs to B. So this type of statement is known as the conditional statement. In mathematics, this type of statements are known as conditional statement. Then X belongs to B. इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट.
और समटाइम्स इस स्टेट को क्या बोलते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इम्प्लीफिकेशंस भी बोलते हैं। सो ये स्टेटमेंट किस तरह से होते हैं, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखे होते हैं, if P is a statement true then Q, if P then Q। तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो P होता है इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस बोलते हैं। और Q को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। और इस तरह की इम्प्लीकेशन को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इफ द स्टेटमेंट P is true, if P is a true statement, then Q is also a true statement। So for example हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इफ माई टीचर cancel the maths class today, then I am going to play cricket। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह से हम, ये एग्जाम्पल है इस तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब P स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी Q स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसके अलावा ये स्टेटमेंट P स्टेटमेंट इज ट्रू होगा और Q स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी हम इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। For example, so now we study some laws of sets। Some law of sets। Transitive law, for example, transitive law। If A and B, if A is subset of B, and B is subset of C, then A is subset of C। तो subsets between the sets follow the transitive। Now you check, now this is homework for you, you check whether the subsets between the sets follow commutative, associative
law. You just check these things. This is the homework for you. Now we define some operations. So operation between the sets. For example, union or union statement, union or intersection and set differences, all these things. तो चूंकि ये कोर्स रियल एनालिसिस का कोर्स है और ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, इसलिए मैं ये चीज़ों को थोड़ा रफली समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले से ही पढ़ के आ चुके होंगे. फॉर एग्जाम्पल यूनियन मीन्स क्या होता है, ये यूनियन बी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये यूनियन बी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी में क्या होते हैं, वे सभी एक्स आते हैं जो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन ऑफ बी. सो इफ ए इज सेट, बी इज अनदर सेट, then A union B is the portion of this portion. Now A intersection B को किस तरह से नोट करते हैं, A intersection B में वे सभी एलिमेंट्स आते हैं X for which X either belongs to A and X either belongs to B. Graphically we can see that if A is the set this, B is the set this, then A intersection B is this portion. Now two sets are disjoint. दो सेट्स को हम डिसजॉइंट बोलेंगे, वो कब बोलेंगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तब हम दो सेट्स को डिसजॉइंट बोलेंगे. यूनियन एंड इंटरसेक्शन. और commutative and associative. Associative. It means that if A, B, C are the sets, then A union B is equal होगा B union A की, and A intersection B equal होगा B intersection A. Second means that if A union B union C is equal to A union B union C. And A intersection B intersection C equal होगा A intersection B intersection C. So this property is known as the associative property, and this property is known as the commutative property of union and intersection. हम इन प्रॉपर्टीज को इजीली प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज हैं. Now what is the set differences? If A and B are the two sets, then A minus B is defined like this: all those elements X for which X belongs to A and X does not belongs to B. So A minus B को हम किस तरह से ग्राफिकली देख सकते हैं, if A is there this set and B is the another set, B is this set, then A minus B means this portion, all the portion of A which are not included in the set B. So this figure note the A minus B.
Now A complement we already defined. A complement is if X is a universal set, then A complement is X minus A. So in this course, basically X is a real number. So all those elements X for which X does not belongs to A. So you can see that what is the complement of minus infinity comma 2. You can easily see that the complement of this set means all those X in the space R for which X does not belongs to the set minus infinity comma 2. Implies that, for example, this set is minus infinity comma 2. Minus infinity comma 2 means this portion. This is 0, this is 2. This is the portion of minus infinity comma 2. So what is the complement of this? This set is this portion. So the complement is this open interval 2 comma infinity. इस तरह से हम देख सकते हैं. For example, if I am asking you what is the complement of the open interval 0,1, open interval 0,1, complement is this minus infinity comma 0 union closed interval 1 comma infinity. This is the complement of this set. So now we define the arbitrary unions and intersections. So let I be a index set. बेसिकली ये इंडेक्स सेट नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है. अगर इंडेक्स सेट काउंटेबल होता है तो ये बेसिकली आई क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है. इफ दिस इज अनकाउंटेबल देन आई इज रियल नंबर. इंडेक्स सेट बेसिकली क्या होता है, लेबल करने के काम आता है. लेबल, दिस इज द लेबलिंग, चीजों के लेबलिंग सेट बोलते हैं इसको. ठीक है. सो आगे मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकाउंटेबल. तो अभी आप ये अज्यूम करें आई इज जस्ट ए नेचुरल नंबर. सो आर्बिट्रेरी यूनियन मींस, आर्बिट्रेरी यूनियन तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं. एंड AI, I belongs to index set, is a collection of i's in suffix, collection of sets, then we denote a union of AI. I belongs to the index set I. So if I is a natural number, then this collection is countable collection. If I is a real number, then the set I is a real number, then this set is uncountable collection. And we denote the union of I belongs to I. AI is the set of all those elements X for which X belongs to alpha for at least one alpha belongs to I. And we denote that if I is a natural number, then this collection, this collection is known as countable unions, countable union of the sets
तो ये क्या कहलाएगा, काउंटेबल यूनियन कहलाएगा ऑफ द सेट्स AI का। ऑफ इफ I इज a real number or any other for or any other countable set, or any other uncountable sets. Then here you can take I is natural number or any countable set Q, कोई भी अगर काउंटेबल सेट होगा, जिस आई अगर कोई भी काउंटेबल सेट होगा तो इस कलेक्शन को बेसिकली काउंटेबल यूनियन ऑफ द सेट से आई कहलाता है। और इफ आई इज ए रियल नंबर और एनी अदर uncountable set, I is either real number or any other uncountable set, then union of AI, I belongs to I, is a uncountable, union of the sets AI. Similarly, we define arbitrary intersection. Arbitrary intersection को हम किस तरह से define कर सकते हैं? Intersection of AI, I belongs to index set, all those elements X for which X belongs to A alpha, for every alpha belongs to index set I. For example, अभी एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। For example, if AN is the class of these intervals, close interval 0, 1 by n, AN आपके पास किसी क्लास है क्लोज इंटरवल 0, 1 by n, यहाँ पे कलेक्शन है सेट्स का, ठीक है, ये एक सेट नहीं है, बहुत सारे सेट्स हैं, और इसमें बेसिकली एलिमेंट्स आएंगे x belongs to R, for which x is between 0 to 1 by n. So what is the meaning here of union of an, and n belongs to n, and I is n. Here I is n, because this labeling is here the labeling is on the set of natural number. So here n belongs to a natural number. So what is the meaning of union of n? The union of n means all those x for which x belongs to 0, 1 by n, for at least 1 n belongs to n. So graphically भी हम सेट को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? If this is the closed, if this is 0 and this is 1, so what is the 0, 1 by n? 0, first set A1 is set is complete set होगा, A1 क्या होगा आपके पास? complete set this होगा, और what is the A2 क्या होगा? A2 क्या होगा? 0 से 1 by 2 तक का सेट होगा, तो this is 1 by 2, so this is the A2 set, this is the A2 set. What is the A3? A3 is this is 1 by 3, so this set is A3. So you can say that what is the union of all n belongs to n? The union is this, union is 0, 1 by 0, 1, close interval 0, 1, because हर एलिमेंट 0, इंटरवल 0, 1 का हर एक एलिमेंट कम किसी ना किसी एक इंटरवल 0, 1 by n में तो होगा ही होगा। इस तरह से हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इफ समबडी आस्क व्हाट इज द इंटरसेक्शन, इन दिस केस